Hello student. Today we will start the topic rolling contact bearing. This is the part of unit 4. Earlier to this we have completed all types of gear. We have done lots of numerical on the gears in the regular classes. Now we will discuss rolling contact bearing. So before this we want to first understand what is bearing and what is the function of the bearing. Bearing is a mechanical element that permits relative motion between the two parts such as shaft and the housing with minimum friction. The function of the bearing are as follows. तो bearing का मेन जो काम होता है वो relative motion को permit करता है between the two parts to minimize the friction. The first function of the bearing. See, bearing is also attached to the same shaft by which a gear is attached. So the first function of the bearing is it ensure the free rotation of the shaft. तो shaft को rotation में कोई भी problem it bear all types of load. जैसा कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि बेरिंग इट बेयर सम टाइप ऑफ फोर्सेस. तो फोर्सेस कहाँ से आएंगे? फॉर एग्जांपल किसी भी बेरिंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम. फोर्सेस कहाँ से आएंगे? किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में चेन ड्राइव हो, चाहे वो बेल्ट ड्राइव हो, चाहे वो गियर ड्राइव हो. गियर ड्राइव में हमने पढ़ा था बेवल गियर, पढ़ा था हमने वर्म गियर, पढ़ा था हेलिकल गियर, पढ़ा था. इन सभी में रेडियल फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस और टेंजेंशियल फोर्सेस आते थे. तो टेंजेंशियल फोर्स account for the rotation of the bearing, rotation of the component, and the rest two component, radial component and the thrust component, that is bear by the bearing itself. और जो लोड जो बियर करता है बेरिंग, उसको क्या करता है अल्टीमेटली फ्रेम और फाउंडेशन तक पहुंचा देता है, ट्रांसमिट कर देता है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द bearing. Now come to the classification of the bearing. Depending upon the direction of forces, it can be divided into two parts: radial bearing and thrust bearing. रेडियल बेयरिंग जो कि रेडियल लोड को सपोर्ट करे, बियर करे. थ्रस्ट बेयरिंग जो कि थ्रस्ट लोड को बियर करे या सपोर्ट करे. थ्रस्ट बेयरिंग मतलब जो एक्सियल लोड आ रहा है, जो हमने फोर्स एनालिसिस में भी देखा था, चाहे वो बेवल गियर का था या वर्म गियर का था, जो एक्सियल लोड आ रहा था दैट इज बियर बाय द थ्रस्ट बेयरिंग एंड द रेडियल लोड इज बियर बाय रेडियल बेयरिंग. तो ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. रेडियल बेयरिंग इज आल्सो बियर सम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट लोड and thrust bearing also bear some amount of radial load. We will discuss later. Now depending upon the type of friction, the sliding contact bearing is also called sliding contact bearing and rolling contact bearing. These are the main two parts of the two parts of the two classification of the bearing. Sliding contact bearing we will discuss in unit number 3. Rolling contact bearing is we will continue reading this topic, rolling contact bearing. Sliding contact bearing is also slip bearing. Rolling contact bearing is also called anti-friction bearing. So anti-friction bearing इसे क्यों कहते हैं? Because amount of friction present between the rotational element is less as compared to sliding contact bearing. Next is sliding contact bearing. In sliding contact bearing, surface of the shaft slides over the surface of the bush, resulting in the friction and wear. तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये bush है, that bush, and this is shaft. In between the shaft and bush there is a lubricating oil. So this bush and shaft is separated by a lubricating oil. To reduce the friction, two surfaces are separated by a film of lubricating oil. अगर lubricating oil अगर नहीं होगा तो this shaft will be in direct contact with the bush and that create sliding contact bearing. Applications are crankshaft bearing, centrifugal pump, large size electric motor, gas turbine, steam turbine, etc. Next is main topic is our rolling contact bearing. It consists of four parts. The rolling contact bearing consists of four parts: inner race, outer race, roller or needle. Fourth one is cage. So you can see this is our shaft, inner race, ball
and inner race, the ball, roller or needle is present. केज क्या होता है? केज क्या होता है? जो विच होल्ड द बॉल एंड रोलर। तो ये इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है, बट केज जो है वो रिटेनर, ऑल्सो कॉल्ड रिटेनर, इट रिटेन द बॉल और रोलर in the bearing. So this rolling in this bearing, rolling elements such as balls and rollers are introduced between the surfaces that are in relative motion. Some applications are machine tool, spindle, automobile, gearboxes, small size electric motors, etc. So this we have this we have seen in the PPT slides. It can be divided into two parts: sliding and rolling contact bearing. The rolling contact bearing is also called anti-friction way, we have discussed, because less friction is present. See, anti-friction bearing doesn't mean absence of friction. The friction is always present between the rotational element or rotational component. This we have discussed. Advantages of the rolling contact bearing is low starting and running friction except at very high speed, ability to withstand momentary shock load, accuracy of shaft alignment, low cost of maintenance, overall smart dimension, easy to mount and erect, reliability and cleanliness. Disadvantage is more noisy at very high speed, low resistance to shock loading, more initial cost, design of bearing housing is complicated. So this thing you can read it out. Now types of rolling contact bearing are deep groove ball bearing. See, basically there are mainly two types of rolling contact bearing. One is ball bearing and one is roller bearing. In ball bearing, ball is there, ball is making a point contact. In roller bearing, cylindrical shape roller element is present in between the outer race and inner race, so there is a line contact. तो उसी के सब रोलर बेरिंग के ही सब कैटेगरी हैं. द मेन क्लासिफिकेशन, मेन टाइप्स ऑफ बेरिंग है बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग. तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग इज अ पार्ट ऑफ बॉल बेरिंग. सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग, रोलर भी हो सकती है, बॉल भी हो सकती है. स्पेरिकल रोलर बेरिंग is also part of self aligning bearing. Taper rolling bearing is also type of roller bearing. Thrust ball bearing. ठीक है. तो these are classification we have discussed. It has 4 component: inner race, outer race, retainer, etc. Now depending upon the rolling element, ball bearing, types of roller bearing are ball bearing and roller bearing, cylindrical roller, taper roller. तो this in ball bearing there is a point contact, ये उल्टा लग गया है यहाँ पर. In roller bearing there is a line contact. तो certain type of bearing, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. Certain type of radial bearing can also take the thrust load, while some thrust bearing are also capable of taking the radial load. Following are the most frequently used bearing: deep groove ball bearing. डीप ग्रुप बॉल बेरिंग, these are the mostly used bearing. तो हम देखेंगे न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है वो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग का ही पूछा जाता है एग्जाम में. दिस बेरिंग टेक्स द रेडियल एज वेल एज एक्सियल लोड. Due to the point load, frictional losses and resultant temperature rise is less. These are the advantage of the ball bearing. This gives good performance, especially at high speed application. Generate noise due to the point contact. Now poor rigidity, it has poor rigidity due to the point contact as compared to roller. तो एक disadvantage इसका क्या है कि rigidity जो है वो poor होती है as compared to roller bearing. Two types of deep groove ball bearing can be there: single row deep groove ball bearing and double row deep groove ball bearing. सिंगल रो में अगर एक रिटेनर के अंदर अगर सिंगल बॉल बेरिंग की लाइन लगी हुई है तो सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग हो गई, और अगर दो पैरेलल लाइन लगी हुई है रिटेनर में, दिस इज कैटेगराइज एज डबल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग. तो ऑब्वियसली बात है, डबल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग में लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल रो deep groove ball bearing. Next is angular contact bearing. This is just modification in the the modification. Some modification is done in the deep groove ball bearing. क्या करते हैं? There is grooves in the inner and outer races. So you can see some grooves are cut in the inner and outer races. So because of that, line of reaction at the contact between the ball and races makes an angle with the axis of bearing. ये बेरिंग की एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है, और इस एक्सिस, इस एंगल के दो कंपोनेंट होते हैं, रेडियल एंड एक्सियल कंपोनेंट. सो वी कैन सी दिस बेरिंग परमिट्स रिलेटिवली लार्ज एक्सियल एंड रेडियल रो. तो अगेन इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट: सिंगल रो एंड डबल रो. अगर सिंगल रो लगी हुई है बॉल की तो सिंगल रो, डबल रो लगी हुई है तो डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग हो जाएगी.
The third important types is cylindrical roller bearing. So it has line contact between the roller and races. लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली रोलिंग एलिमेंट अगर लगाए तो बॉल से ज्यादा बियर करेगा, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल रोलर इज हाई एज compared to ball bearing. It has more rigid, so we have seen the disadvantage in the roller ball bearing. There was an issue of rigidity, so this cylindrical roller bearing are more rigid than ball bearing. Now one disadvantage is cylindrical roller bearing cannot take the thrust load. The thrust load, ये bearing because of their shape as cylindrical shape, this cannot bear the thrust load. One more disadvantage is it generate more noise. So thrust लोड बियर नहीं कर पाती है ये सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, इसके लिए हम यूज करते हैं टेपर रोलर बेरिंग। तो टेपर रोलर बेरिंग का हमने पीछे डायग्राम देखा था। इन द टेपर रोलर बेरिंग इंस्टेड ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर एलिमेंट कोनिकल शेप का एलिमेंट लगा देते हैं। दिस कोनिकल शेप एलिमेंट it has axis and it makes some angle with axis of bearing। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक्सियल कंपोनेंट एंड रेडियल कंपोनेंट। तो इन द टेपर रोलर बेरिंग we remove the disadvantage of cylindrical roller bearing। cylindrical roller bearing में हमने देखा it cannot take the thrust load, but taper roller bearing can bear thrust as well as radial load। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बेरिंग कभी कभी दो नंबर में पूछ लिया जाता है, सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होती है? तो इन द सेल्फ अलाइनिंग इट कैन बॉल बेरिंग, इट कैन स्पेरिकल रोलर बेरिंग। इन द सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग there is an arrangement so that some bearing do self alignment। so we can read it out। ball bearing consists of two rows of wall which rows on the common spherical surface। ball bearing की हम बात कर रहे हैं अभी। if the ball element is present, ball bearing consists of two rows of wall which rows on a common spherical surface in the outer race। in this case assembly of the shaft, the inner race of the ball with cage can freely roll and adjust itself to the angular misalignment of the shaft। तो वी कैन सी द केज, मतलब जो रिटेनर है उसमें थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इट कैन फ्रीली रोल, थोड़ा सा रोल कर लेता है अपने आप को, बॉल की पोजीशन को जो है वो एडजस्ट कर लेता है। तो इसका एडजस्टमेंट का फायदा क्या होता है? दिस बेरिंग permits minor angular misalignment of the shaft related to the housing। तो अगर शेफ्ट के बीच में जो कि कनेक्टेड है हाउसिंग से, अगर थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट है शेफ्ट पे, तो ये सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग ऑटोमेटिकली उसे मिस अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेती है। सिमिलर ये हमने डिस्कस किया बॉल के लिए, एबीसी द सिमिलर इज फॉर द स्पेरिकल रोलर सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग, इट हैज आल्सो सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेल्फ अलाइनिंग bearing। So these are suitable for the application where misalignment can arise due to error in mountings or due to the deflection of the shaft। तो shaft में misalignment क्यों होगा? मे बी हम shaft को माउंट करते समय, shaft को इंस्टॉल करते समय, या डिफ्लेक्शन अगर shaft में हो जाएगा तो उसकी वजह से misalignment हो सकता है। that can be accommodated by the self aligning bearing। तो this lecture was all about the basic introduction of the rolling contact bearing and types of the rolling contact bearing। we will discuss the further concept in the next videos, which is visually used in the numerical problem। so thank you very much, just stay in touch, thank you।